Hello, my dear aspirants. We are continuing with the Science and Technology Current Affairs April 2026 Part 3. For UPSC Prelims 2026, you have to consistently prepare for 12 to 15 months current affairs, means 2025 to 2026 April. So let's dive into the next update. Meta launches Muse Spark AI model. Meta has officially launched Muse Spark. It is powerful proprietary artificial intelligence model to date. So it is developed by Meta Super Intelligence Lab MSL under Chief Officer Alexander Wang. Chief AI Officer Alexander Wang. This flagship multimodal reasoning model marks a significant shift away from Meta's traditional open source strategy towards proprietary monetization focused AI structure. So Meta has launched Muse Spark, a natively multimodal reasoning model designed to power Meta AI and enhance everyday interaction across platforms like WhatsApp, Instagram, and Facebook. So key features and capabilities, it provides everyday integrations, visual coding, and multi-agent orchestration. Means unlike standard models, it can spawn multiple mini agents that communicate with one another, such as one managing the database and another working on the UI simultaneously. So Meta platforms ने MuseSpark AI मॉडल लॉन्च किया है. MuseSpark एडवांस जनरेटिव AI एप्लीकेशन के लिए विकसित किया गया है. MuseSpark किस लिए विकसित किया गया है? For advanced generative AI application. So the model can process text. It can process text, images, and interactive content. This launch reflects growing global competition in artificial intelligence. MuseSpark AI model uses advanced deep learning and neural network system. So AI models are increasingly shaping social media and digital services like WhatsApp, Instagram, and Facebook. This discussion continue around ethics and responsible AI deployment and developments. So it is important content affair related to generative AI and technology innovation. So AI race gets hotter. Meta launches powerful new Muse Spark AI model. Meta launched Muse Spark, an advanced generative AI model for multimodal digital applications. Next update is astronomers find unusual solar system with two Earth-like planets. एस्ट्रोनॉमर ने एक अनोखा प्लानिटरी सिस्टम खोजा है जिसमें दो अर्थ-like planets मौजूद है. So the planets are believed to have rocky surface similar to Earth. So astronomers have discovered a highly unusual solar system located about 120 light years away. It features two super-Earth exoplanets that are similar in size and composition to Earth. दो सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट दिखा है जो कि सिमिलर है साइज एंड कंपोजिशन की से अर्थ में, बट देन लेआउट इज बिजार रॉकी. अर्थ लाइक प्लैनेट्स ऑर्बिट further from the star than its gas giants, entirely breaking traditional planetary formation model. So the bizarre system structure, the exoplanet, the system contains two Earth-side terrestrial planets. So inside our configuration, in our solar system, rocky worlds are close to the rocky worlds. Earth is close to the sun, while gas giants lie further out, distant out. So in this system, however, the gas giants are located in our solar system are located and rocky worlds are close to the sun while gas giants lie further out, just reverse. So however, the gas giants are located closer to the host star while the earth-like planets orbit much farther out. So because this structure defies conventional theories, astronomers are forced to rethink how planetary systems evolve and migrate over time. So astronomers discovered an unusual planetary system containing two Earth-like planets. The planets are believed to have rocky Earth surface to Earth. Scientists are studying whether the planet lie in the star's habitable zone or not. So discovery is important for exoplanet and astrobiology studies. The star solar system showed an uncommon orbital configuration. This finding may help scientists to search for possible extraterrestrial life.
So study helps understand how planetary system form and evolve. So it is important current affair related to astronomy and planetary science. So क्या अर्थ जैसी दूसरी दुनिया मिल गई? Scientists discover rare system with two Earth-like planets. Astronomer discovered an unusual planetary system containing two potentially Earth-like exoplanets. Next update is India achieves PFBR criticality, enters nuclear second stage. So India achieved a historic milestone when the indigenous prototype fast breeder reactor PFBR at Kalapakam, Tamil Nadu attained first criticality. So it signifies the safe initiation of self-sustaining nuclear chain reaction, forming launching the country to the second and crucial stage of three-stage severe civil nuclear program. So it is developed by Indira Gandhi Center for Atomic Research and operated by Bhavani. This 500 megawatt electrical reactor marks a massive leap development in long-term energy sustainability. So three-stage strategy envisioned by Dr. Homi J. Bhabha. So stage 1 is pressurized heavy water reactor. Stage 2 is fast reactor BFRS. Stage 3 is sodium based reactors. Significance achieved by deep domestic capability means movement towards Atmanirbhar Bharat, allowing India to bypass initial international trade bans and manufacture crucial high-end components locally through entities like L&T and Vale Company. सो इंडिया ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी हासिल की है. सो यह भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के दूसरी चरण में प्रवेश का संकेत है. पीएफबीआर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ लोकेटेड है? कलापाकम तमिलनाडु में. और पीएफबीआर इंपॉर्टेंट है इंडिया के लॉन्ग टर्म थोरियम बेस्ड किसके बेस्ड थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए. ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूस करेगा मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम. मीन्स ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जितना फ्यूल उपयोग करते हैं उससे अधिक फ्यूल उत्पन्न कर सकते हैं. सो इट इज ए अचीवमेंट which strengthened India's clean energy and energy security goals. PFBR reflects India's indigenous nuclear engineering capability. So this news is related to nuclear energy and strategic technology. So PFBR का फुल फॉर्म याद रखना है. प्रोटोटाइप फास्ट रिएक्टर कहाँ पे हुआ है? कालापाकम तमिलनाडु में. So India enters a new nuclear era. PFBR critically achieved at Kalapakam, Tamil Nadu. Next update is India sends humanitarian aid to flood hit Afghanistan. So India sent humanitarian help to flood affected Afghanistan. Afghanistan faced severe floods, बहुत ज़्यादा उसमें बाढ़ आया. So Afghanistan faced severe floods causing loss of lives and property. So India provides help included food supplies, medicine and emergency relief materials. India continues its humanitarian outreach to neighboring countries. So assistance aim to support affected communities and recovery efforts. The move highlights regional cooperation during natural disasters. So it is important current affairs which is related to disaster management and international relation. Humanitarian admins, we have anyone is providing emergency assistance to affected people. Disaster relief means help provided during natural disaster. So India and Afghanistan, India sent humanitarian help and relief supplies to flood affected Afghanistan. Next update is Mission Mitra test astronaut endurance in Ladakh. Now, India dispatched a fresh consignment of humanitarian assistance and disaster relief HDR materials to HDR को याद रखना है. Now, Mission Mitra test astronaut endurance in Ladakh. Mission Mitra tested astronaut endurance and survival capability in high altitude condition of Ladakh. मिशन मित्रा ने लद्दाख की हाई अल्टीट्यूड कंडीशन में एस्ट्रोनॉइट्स की एंडोरेंस और सर्वाइवल कैपेबिलिटी का परीक्षण किया है. सो इसरो का मिशन मित्रा मैपिंग, उसका फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंट्रोपेरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पांस असेसमेंट, इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख. It tests future Gaganyaan astronauts' physical and psychological resilience against extreme cold, hypoxia, isolation to ensure
peak decision making and team cohesion under harsh environmental stresses. So this mission stand for mapping of interoperable traits and response assessment, Mitra. Leh Ladakh location, approx 3,500 to 400 meters altitudes. Partnership ISRO Human Space Flight Center, Indian Air Force Institute of Aerospace Medicine, India's 4 designated Gagan Yatris, Group Captain Sudhanshu Shukla, Prashant Balakrishnan Nair, Ajit Krishnan and Angad Pratap. So why it is Ladakh? The Ladakh has unique properties because it creates an unmatched Earth-based simulation for deep space extraterrestrial habitation. Hypoxia means it has thin oxygen, scarce. There is a scarcity of oxygen. Air directly mimics the depressurized condition of a space environment. In that place, Ladakh, there is extreme cold, freezing drop to freezing lows, and then very low temperature. The cold is very high. Isolation, the rugged and remote terrain isolates the crew, testing their mental health, coping mechanism and group dynamics. So ये एक्सरसाइज सपोर्ट करेगा फ्यूचर ह्यूमन स्पेस मिशन की तैयारी को समर्थन देगा बिकॉज ऑफ द लद्दाख के पास हाइपोक्सिया, एक्सट्रीम कोल्ड एंड आइसोलेशन है और साइंटिस्ट मॉनिटर करेगा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंडोरेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स. मिशन कंट्रीब्यूट टू रिसर्च इन स्पेस मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉट हेल्थ पे और एस्ट्रोनॉट्स ने सर्वाइवल और आइसोलेशन बेस्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की. सो ऐसे अध्ययन भारत के फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जैसे गगनयान के लिए महत्वपूर्ण है. सो ये मदद करेगा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में मानव अडेप्टेशन को समझने में मदद करेगा, इसलिए लेह लद्दाख को चुना गया. सो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एरोस्पेस मेडिसिन है. Endurance means ability to withstand difficult condition. सो स्पेस जैसी कंडीशन में ट्रेनिंग कहाँ हुई? लेह लद्दाख में. मिशन मित्रा टेस्ट एस्ट्रोनॉट एंडोरेंस इन लद्दाख. मिशन मित्रा टेस्टेड एस्ट्रोनॉट एंडोरेंस एंड सर्वाइवल कैपेबिलिटी इन लद्दाख extreme high altitude environment. Next update is sleep apnea raises cardiovascular death risk by 71%. So researchers reveals adults with obstructive sleep OSA full form is obstructive sleep apnea have a 71% higher risk of cardiovascular event or all cause death compared to those without the condition. So there is an increase of 71% risk of death because of the patient suffering of sleep apnea. So key takeaways from the research include the condition causes repeated upper airway obstruction during sleep, restricting airflow and depriving the body is not giving sufficient oxygen. Patient faces a 70% increased risk of serious heart events like heart attacks and stroke and premature death from any cause. Any estimated 40 to 70% of people with obstructive sleep apnea are also overweight. This type of patient are overweight or living with obesity, which significantly increases the severity of sleep apnea. Aggravate the severity of sleep apnea. So, with the help of common treatment and management strategy includes CPAP therapy. याद क्या है? CPAP means continuous positive airway pressure therapy. ये मशीन यूज होगा माइल्ड एयर प्रेशर्स टू कीप योर एयरवेज ओपन व्हाइल यू स्लीप, मेकिंग देम ए हाई इफेक्टिव डिफेंस. Lifestyle adjustment in the weight loss, quitting smoking and reducing alcohol consumption can reduce sleep apnea severity. So एक नए अध्ययन में पाया गया कि स्लीप एपनिया कार्डियोवास्कुलर डेथ रिस्क को काफी बढ़ाता है. रिसर्चर ने रिपोर्टेड नियरली 70% इंक्रीज इन कार्डियोवास्कुलर डेथ रेट. स्लीप एपनिया एक डिसऑर्डर है जहां ब्रीथिंग रिपीटेडली स्टॉप ड्यूरिंग स्लीप. स्लीप एपनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें नींद के दौरान बार बार ब्रीथिंग रुकती है. सो द कंडीशन इंक्रीजेस स्ट्रेस ऑन द हार्ट एंड ब्लड वेसल. सिम्टम इंक्लूड्स लाउड स्नोरिंग, फैटिग एंड इंटरप्टेड स्लीप. जो बहुत ज्यादा खराटा ले रहा है, थकावट है और उसके पास स्लीप उसकी रुक रुक जा रही है, इंटरप्टेड स्लीप हो रहा है. सो स्लीप एपनिया इज लिंक्ड विद हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज. सो मेनी केसेस रिमेन अनडायग्नोस्ड. अभी तक बहुत सारे केसेस जो है अनडायग्नोस्ड है वर्ल्ड वाइड. सो वेट मैनेजमेंट एंड हेल्दी स्लीप हैबिट्स में रिड्यूस दिस रिस्क. सो ये इम्पोर्टेंट
affair current affair related to public health and cardiovascular diseases. So क्या खराटे जानलेवा हो सकता है? Sleep apnea linked to 71% higher heart death risk. तो sleep apnea क्या है? Sleep Now, next update is center cracks down on misuse of weight loss GLP-1 drugs. Union government started action against misuse of कौन सा ड्रग? GLP-1 drugs, जो कि वेट लॉस के लिए लोग लेते हैं, वेट लॉस ड्रग्स. द यूनियन गवर्नमेंट स्टार्टेड एक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ GLP-1 ड्रग्स. GLP-1 drugs क्या है? These medicine are increasingly being used for rapid weight loss. इस दवाओं का उपयोग तेजी से वेट लॉस के लिए बढ़ रहा है. GLP-1 drugs are medicine originally developed for diabetes treatment. ये ड्रग ओरिजिनली डेवलप किस लिए हुआ था? डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए. सो इम्पोर्टेंट यूज में कॉज साइड इफेक्ट. अगर हम वेट लॉस के लिए इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो द पेशेंट मे कॉज इट मे कॉज साइड इफेक्ट्स एंड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन. ऑथोरिटी स्टेट्स दैट सच ड्रग्स शुड ओनली बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन. अब GLP-1 ड्रग जो वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं, यू कैन नॉट यूज, यू हैव टू यूज अंडर medical supervision. So health regulators are monitoring illegal sales and misuse. So misuse of prescription medicine is becoming a growing public health concern. So GLP-1 drugs are linked to obesity and type 2 diabetes management. GLP-1 drugs obesity और type 2 diabetes management से जुड़ी है. So ये important current affair related है pharmaceuticals and healthcare regulation के लिए. अब GLP-1 ड्रग का GLP का फुल फॉर्म क्या है? ग्लूकागन, ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1. सो GLP-1 वेट लॉस ड्रग मिसयूज हो रहा है. वेट लॉस इंजेक्शन अंडर स्कैनर सेंटर क्रैक्स डाउन ऑन मिसयूज ऑफ GLP-1 ड्रग. So the central government of India has launched a nationwide crackdown on unauthorized sale of misuse of GLP-1 receptor agonist drug, such as the drugs names are semaglutides, liraglutides, and tirzepatides. These it is initiated by Drug Controller General of India DCGI and Central Drug Standard Control Organization CDSCO. This regulatory surge addresses the booming demand for these advanced diabetes and weight loss medication, which are increasingly being sold over the counter without valid prescription. So without valid prescription, these medicine are being sold in the market. The government reiterated that GLP-1 drugs can only be prescribed by specific medical specialists. So these are the important points. So specifically, it is prescribed by endocrinologist, internal medicine expert, or cardiologist. Next update is Yuvika program boost space science interest among students. So the Yuvika Yuva Vigyani Karyakaram program by ISRO. ISRO is successfully boosting space science interest among Indian students by providing class 9 students with hand-on exposure to space technology, robotics, and astrophysics. सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का युविका प्रोग्राम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम प्रोग्राम, छात्रों में क्लास 9th स्टूडेंट को स्पेस साइंस के लिए रुचि बढ़ाने के लिए द स्टूडेंट हैव जस्ट इन्वॉल्व ऑन हैंड्स ऑन एक्सपोजर experienced in the field of space technology, robotics, and astrophysics. So specifically designed for students who have just completed class 9, aiming to catch them young. The aim is to catch them young. Catch them young. So it is specifically designed for students who have just completed class 9, aiming to catch them young. So recent immersing learning, the 2-week residential. This program is a 2-week residential program, includes classroom lectures, hands-on model, rocketry, sunset experiments, and the facility visit to ISRO centers. So it features a special weightage and quotas. Example, 50% for students from rural and remote areas to endure inclusive participation.
There is a disabled student can also participate. So Yuvika stand for Yuva Vigyani Karyakrams. The program is designed mainly for school students who have passed class 9. It promotes awareness about space technology, space research. Students receive practical exposure through lecture and laboratory. Program aims to develop scientific thinking among young students, support India's long-term space and innovative ecosystem, encourages students to pursue career in STEM and aerospace field. So India's future astronaut in making, ISRO's Yuvika inspires students toward space science. Next update is अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड टू बूस्ट स्पेस स्टार्टअप. भारत ने स्पेस स्टार्टअप को समर्थन देने हेतु अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया. So Antriksh Venture Capital Fund is India's dedicated space tech investment vehicles featuring a corpus of 1,005 crore to provide early and growth stage capital to private space startup. The fund is designated to commercialize indigenous space technologies and scale operation across the private space sector. Fund size is 1,005 crore. 1,005 crores. Sponsor is SIDBI Venture Capital Limited. Key investor is Indian Space Promotion and Authorization Center, Department of Science. The fund aims to, this fund 1,005 crore fund aims to strengthen India's growing private space ecosystem. It will support innovation in satellites, satellites launch system, and space application space application. So this venture capital funding helps startups scale and advance technologies. This initiative focuses on deep tech and aerospace entrepreneurship, supports India's self-dependence in strategic space technology. The fund complements India's expanding space reforms and ISRO collaboration. यह fund भारत के expanding space reform और ISRO collaboration को पूरक बनाता है. So space startups can contribute to innovation, job also, and economic growth. So भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये हुआ. वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल उसको बोलते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करता है किसमें? स्टार्टअप कंपनीज में. डीप टेक क्या है? एडवांस साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी सेक्टर है. तो अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड टू बूस्ट स्पेस स्टार्टअप. Innovation means India's space startup getting a big boost and new Antriksh VC fund launch. Next up is coal to ammonium nitrate project planned in Odisha. A new coal to ammonium nitrate project was announced in Odisha. Odisha में नया coal to ammonium nitrate project was announced हुआ है. The project aims to convert coal into ammonia. To convert coal into ammonia, ammonium nitrate for industrial use. Ammonium nitrate is widely used in fertilizer. Where it is used? Ammonium nitrate is used in fertilizer and mining explosive. Coal gasification, the project uses coal, the process used is coal gasification technology. It helps improve domestic production of industrial chemicals. So it is a big initiative towards Atmanirbhar Bharat. The project may create jobs and industrial growth in Odisha. This initiative supports India's self-reliance in strategic industrial materials. Expert stresses the need for cleaner and coal technologies and emission controls. So this current affair related to coal gasification and industrial development. So coal gasification means coal to ammonium nitrate project. Conversion of coal to ammonium is known as a coal gasification. So Bharat Coal Gasification and Chemical Limited, BCGCL, a joint venture of Coal India Limited and BHEL, is developing India's first indigenous coal to ammonium nitrate project line in लखनपुर उड़ीसा. सो कोल गैसिफिकेशन का मतलब हो जिसमें कोल से अमोनियम नाइट्रेट बदलता है. तो भारत कोल गैसिफिकेशन केमिकल लिमिटेड और इसके भेल के बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ जो कन्वर्ट करेगा कोल टू अमोनियम नाइट्रेट में. कहाँ पे? लखनपुर उड़ीसा में. दैट 25,000 crore प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन 350 acres of Mahanadi Coalfield Limited land में और with produce 200 tons per day of ammonium nitrate using whale technologies. Project detail कहाँ? लखनपुर
डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। 2000 tons per day produce of ammonium nitrate with additional nitric acid production. Indigenous coal gasification technology develop भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल करेगा। की पार्टनर क्या है? बीसीजीसीएल, एमसीएल, लार्सन एंड टर्बो। सो कोल गैसिफिकेशन का मतलब होता है कोल टू अमोनियम नाइट्रेट, कोल टू अमोनियम नाइट्रेट्स। सो इसी प्रोसेस को कोल्ड गैसिफिकेशन कहते हैं, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल हो। अमोनियम नाइट्रेट यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है फर्टिलाइजर में, माइनिंग, एक्सप्लोजिव में। नेक्स्ट अपडेट है अर्थक्वेक लाइट्स फेनोमिनन ऑब्जर्व नियर टर्की ग्रीस ट्रेमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। टर्की एंड ग्रीस के बीच में आई ट्रेमर्स के दौरान दुर्लभ अर्थक्वेक लाइट्स देखी गई। सो अर्थक्वेक लाइट्स EQL were observed in the skies above the Aegean Sea coastal in Turkey and Greece during recent seismic tremors. टर्की और ग्रीस के बीच में ट्रेमर के दौरान दुर्लभ अर्थक्वेक लाइट्स देखी गई। During recent seismic tremors, witnesses captured footage and photos of the glowing colorful beams stretching into the night, sparkling white, displayed away, and viral social media discussion also there. The science behind earthquake light is tectonic stress, electric aviation, and plasma emission. So earthquake lights are glowing flashes seen in the sky before, during earthquakes. Scientific beliefs tectonic stress may release electrical changes in tectonic stress may release changes इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन रॉक्स। ये टेक्टोनिक स्ट्रेस से क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आ जाता है रॉक्स में। फिर सिज्मिक एक्टिविटी में फेनोमिना है जो लिंक्ड होता है। सिज्मिक एक्टिविटी फेनोमिना किससे लिंक होता है? ये लिंक्ड होता है टेक्टोनिक प्लेट से, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट एंड सिज्मिक एक्टिविटी से। सो अर्थक्वेक लाइट्स आर कंसीडर्ड एक्सट्रीमली रेयर एंड नॉट फुली अंडरस्टूड। अर्थक्वेक लाइट्स बहुत ही अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह समझी ही नहीं गई है। The event may help scientists study earthquake prediction mechanism. ये इवेंट अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मैकेनिज्म को अध्ययन करने में मदद कर सकती है। सो द रीजन इज हाईली ये रीजन बहुत ही ज्यादा हाईली सिस्मिक एक्टिव किस जगह पे? टर्की एंड ग्रीस रीजन में, ड्यू टू टेक्टोनिक बाउंड्रीज। सो वीडियोज ऑफ ग्लोइंग लाइट स्प्रेड वाइडली ऑन सोशल मीडिया। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड किससे है? जियोफिजिक्स एंड अर्थक्वेक साइंस से। टेक्टोनिक प्लेट्स किसको बोलते हैं? लार्ज मूविंग सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। सिज्मिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? अर्थक्वेक रिलेटेड जियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जियोफिजिक्स को किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल प्रोसेसेस। कहाँ हुआ? टर्की एंड ग्रीस में। अर्थक्वेक से पहले आसमान में चमकती रोशनी। रियर अर्थक्वेक स्लाइड सीन नियर टर्की ग्रीस ट्रेमर्स। Thank you for watching. Best of luck for your upcoming for your UPSC pre 2026, which is going to happen on Sunday. Best of luck, my dear बच्चे।